अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंजाइम एंड डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिकेशंस। कह रहा है बच्चों कि एंजाइम को डिफाइन करें और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिकेशंस को डिस्क्राइब करें। So first of all हमारे पास आ जाएगी एंजाइम की डेफिनेशन। एन एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, टिपिकली अ प्रोटीन that significantly speeds up the rate of a chemical reaction in a living organism। कह रहा बच्चों एंजाइम एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है जो क्या 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 करता है, टिपिकली प्रोटीन होता है इन नेचर, जो स्पीड अप करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Enzymes are catalysts that lower the activation energy required for a reaction to occur, allowing the reaction to proceed faster and more efficiently। कह रहा बच्चों एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं एंड रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं फास्टर अर्ली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट वन इज हाई स्पेसिफिसिटी के एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। Enzymes are highly specific to the reaction they catalyze and substrate they act upon। कह रहा है एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि कौन सा रिएक्शन उन्होंने कैटालाइज करना है और कौन से सबस्ट्रेट पे उन्होंने एक्ट करना है। कैटालिटिक एक्टिविटी, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और अल्टर्ड इन द प्रोसेस। उसके अलावा कह रहा है कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं खुद कंज्यूम और अल्टर हुए बगैर। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम्स हैव optimal temperature and pH ranges for maximum activity. Reusability, enzymes can catalyze multiple reactions without being used up. Saturation, enzymes can become saturated with substrate leading to a decrease in reaction rate. Inhibition, enzymes can be inhibited by molecules that bind to the active site or alter the enzyme structure. Denaturation, enzymes can be denatured by extreme temperatures, pH or chemicals, leading to loss of activity. Specifications of enzymes: enzyme commission number, EC number, a unique identifier for each enzyme indicating its reaction and substrate specificity, the specific molecules an enzyme acts upon. Coenzymes and cofactors, non-protein molecules required for enzyme activity such as vitamins or metal ions. Active site, the region on the enzyme where substrate binding and catalysis occur. Turnover number, the maximum number of substrate molecules an enzyme can convert to products per unit time. Next is Michaelis constant Km, a measure of enzyme's affinity for its substrate. Next is optimum substrate concentration, the concentration of substrate at which the enzyme is most active. These characteristics and specifications highlight the unique properties of enzymes which enable them to play a crucial role in maintaining life's complex biological processes. Next question is question number 2. What is energy of activation? Explain with reference to enzyme. Energy of activation क्या होती है? With reference to enzyme explain करें। The energy of activation is the minimum amount of energy required for a chemical reaction to occur। कह रहा है बच्चों ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इट्स द एनर्जी बैरियर दैट मस्ट बी ओवरकम फॉर द रिएक्टेंट्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं ये वो एनर्जी बैरियर होता है जिसको ओवरकम करना पड़ता है रिएक्टेंट्स को किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए।
Reference to enzyme. In the context of enzymes, the energy of activation is the energy required for the substrate to bind to the active site and undergo a chemical reaction. Enzymes lower the energy of activation by binding substrate. Enzymes position the substrate in a way that reduces the energy required for the reaction to occur. Conformational changes. Enzymes undergo conformational changes that facilitate the reaction, reducing the energy barrier, providing alternative reaction pathways. Enzymes offer alternative reaction pathways with lower energy requirements. By reducing the energy of activation, enzymes increase the reaction rate, allowing the reaction to proceed faster and more efficiently. This is known as catalysis. Key points. Enzymes do not change the overall energy change of the reaction delta G. Enzymes only reduce the energy of activation EA, making the reaction more accessible. The energy of activation is reduced but not eliminated by enzymes. In summary, the energy of activation is the energy barrier that must be overcome for a chemical reaction to occur. Enzymes lower this energy barrier, increasing the reaction rate and efficiency without changing the overall energy change of the reaction. Next is question number 3, which is what happens to enzymes when you increase or decrease A temperature, B pH, C substrate concentration. क्या है बच्चों enzymes को क्या होगा अगर हम ये तीनों चीजें इंक्रीज या डिक्रीज करें टेम्परेचर पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर. Increase temperature. Enzyme activities increase up to a point as temperature rises, as molecules move faster and collide more frequently. क्या है बच्चों enzyme की activity increase होगी जैसे ही temperature rise होगा but up to a point. क्यों increase होगी activity? क्योंकि molecules faster move करेंगे and collide more frequently. Optimal temperature is reached where enzyme activity is maximum. कह रहा बच्चों फिर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच हो जाएगा जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी मैक्सिमम. फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर डीनेचर द एंजाइम लीडिंग टू डिक्रीज एक्टिविटी एंड इवेंचुअल इनएक्टिवेशन. क्या है इसे फर्दर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम क्या हो जाएगा डीनेचर विच इज लीड्स टू द डिक्रीज एक्टिविटी और एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी एंड इवेंचुअली इनएक्टिवेशन हो जाएगी यानी एंजाइम क्या हो जाएगा इनएक्टिव. डिक्रीज टेम्परेचर. Enzyme activity decreases as temperature drops, as molecular movement slow down. कह रहा है एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा या डिक्रीज होगा क्यों क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाएगी. एंजाइम एक्टिविटी मे बिकम टू स्लो टू बी इफेक्टिव. नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज पीएच. इंक्रीज पीएच मोर अल्कलाइन. Enzyme activity may increase slightly, but most enzymes are sensitive to extreme pH. कह रहा है enzyme activity थोड़ी सी increase कर सकती है लेकिन ज़्यादातर enzymes sensitive होते हैं extreme pH पे. High pH can denature enzymes, leading to decreased activity. अगर बहुत high pH है तो वो enzyme को denature कर देगी और activity को क्या कर देगी decrease. Next is decreased pH more acidic. Enzyme activity may increase slightly, but most enzymes are sensitive to extreme pH. Low pH can denature enzymes, leading to decreased activity. Optimal pH. Enzymes have an optimal pH range where activity is maximum. कह रहा बच्चों हर एंजाइम की एक ऑप्टिमल पीएच होती है रेंज होती है जिसपे उसकी एक्टिविटी का होती है मैक्सिमम. नेक्स्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की. अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो फिर क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन राइज एज मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल फॉर बाइंडिंग. क्या एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी क्यों
क्योंकि ज़्यादा सबस्ट्रेट अवेलेबल होंगे बाइंडिंग के लिए। सैचुरेशन पॉइंट इज अचीव्ड वेयर एंजाइम एक्टिविटी लेवल्स ऑफ एजाला एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड। कह रहा है पहले तो इंक्रीज होगी लेकिन बाद में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी लेवल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तमाम एक्टिव साइट्स जो एंजाइम की थी वो ऑक्युपाई हो गई हैं, तो अब और कोई फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है जिसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर सके। तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जाके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ हो जाएगा, यानी फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस as substrate concentration drops as few substrate molecules are available for binding। कह रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ड्रॉप करती है, क्यों? थोड़े सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं बाइंडिंग के लिए। नेक्स्ट इज enzyme activity may become too slow to be effective. Remember, each enzyme is its own unique optimal temperature, pH, and substrate concentration ranges. Change outside these ranges can significantly impact enzyme activity. Next is question number 4. Only the related key can open the lock. How this fact is true for enzyme? Explain with example. The concept only the related key can open the lock is analogous to specificity of enzyme for their substrate। कह रहा है ये जो related key can open the lock ये analogous है to the specificity of enzyme for substrate, कि जैसे एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है सबस्ट्रेट के लिए, तो इस एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है सबस्ट्रेट के लिए, ऐसी एक की स्पेसिफिक होती है लॉक के लिए। ठीक है, जस्ट एज अ स्पेसिफिक की फिट्स परफेक्टली इनटू लॉक, एन एंजाइम एक्टिव साइट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड to bind a particular substrate. Key points: shape and structure. The active site of an enzyme has a unique shape and structure that complements the substrate molecule. Chemical properties. The active site's chemical properties such as charge and polarity match the substrate's properties. Specific binding. The enzyme binds specifically to the substrate, excluding other molecules. Examples are lactase enzyme, which break down lactose or sugar found in milk into glucose and lactose। लैक्टेज जो एंजाइम है ये लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और लैक्टोज में। द एक्टिव साइट ऑफ लैक्टेज is specifically shaped to bind lactose, not other sugars. Next is trypsin enzyme degrades protein into smaller peptide. The active site of trypsin is designed to bind to specific amino acid sequences, not others. Next is hexokinase enzyme phosphorylates glucose to form glucose 6-phosphate. The active site of hexokinase is specific to glucose, not other hexose sugars. Next is consequences of substrate specificity. Efficient catalysis. Enzymes efficiently catalyze chemical reactions with their specific substrate, minimize side reactions. Enzymes avoid unwanted side reactions with non-specific substrate. Regulation of metabolic pathways. Enzyme specificity helps regulate metabolic pathways, ensuring proper cellular function. In summary, the unique shape, structure, and chemical properties of an enzyme's active site make it specific to a particular substrate. Just like a key fits a specific lock, this specificity enables efficient catalysis, minimizes side reactions, and regulates metabolic pathways. Next is question number 5. Describe the structure of and uses of ATP. First of all, we see structure of ATP. Adenosine triphosphate ATP is a nucleotide consisting of three components. First one is adenine, a nitrogenous base, ribose, a 5-carbon sugar, and 3-phosphate groups, triphosphate. The triphosphate tail is the key to ATP's energy storing ability. The bond between second and third phosphate groups is high energy, making it easily breakable to release energy. Next is uses of ATP. Energy currency. ATP is the primary energy currency of cell, storing and transferring energy between reactions. Muscle contraction. ATP fuels muscle contraction
and relaxation, enabling movement. Protein synthesis. ATP drives protein synthesis, assembling amino acid into protein. Membrane transport. ATP powers transport of molecules across cell membrane, maintaining cellular homeostasis. Cell signaling. ATP participates in cell signaling pathways, transmitting signals within cell. Next is biosynthesis. ATP provides energy for biosynthetic reactions, building complex molecules from simpler ones. Cell division. ATP fuels cell division processes, ensuring proper chromosome separation and cell growth. Neurotransmission. ATP regulates neurotransmitter release and uptake, facilitating communication between neurons. ATP cycle. ATP synthesis. Energy from food is used to generate ATP during cellular respiration. ATP hydrolysis. ATP is broken down to release energy, converting it back to ADP, adenosine diphosphate, and PI, inorganic phosphate. ADP recycling. ADP is recycled back to ATP, re-entering the energy cycle. In summary, ATP's unique structure allows it to store and release energy efficiently, making it an essential molecule for various cellular processes. Its uses range from energy transfer and muscle contraction to protein synthesis and cell signaling, highlighting its central role in maintaining life's complex processes. Next is question number 6. Describe and sketch लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की दो फेजेस में हम डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शन। तो पहले हमने डिस्क्राइब करना है लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द लाइट रिएक्शंस occur in thalloid membrane of chloroplast and involve conversion of light energy into ATP and NADPH. Steps of light reactions. First one is light absorption. Light is absorbed by pigment called chlorophyll A, chlorophyll B, and other accessory pigments in thalloid membrane. Excitation of electron. Energy from light excites electrons in the pigments, which are then transferred to a spinal molecule called an electron acceptor. Transfer of electrons. Electrons are passed along a series of electron carriers in the thalloid membrane, ultimately resulting in the formation of a high energy molecule called ATP. Next is generation of ATP. The energy from the excited electrons is used to pump protons, hydrogen ions across the thalloid membrane, creating a proton gradient. क्या बच्चों, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से एनर्जी आती है वो यूज होती है प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या क्रिएट कर देती है। दिस ग्रेडियंट ड्राइव्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी थ्रू द प्रोसेस ऑफ chemiosmosis. Next is reduction of NADP plus. The electrons ultimately reduce NADP plus to form NADPH. ये बच्चों हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का स्केच है, ये आप लोग देख सकते हैं कि फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए, वहां पे उन्होंने प्रोटॉन की पंपिंग की, जिससे क्या हुआ, एटीपी सिंथेज एक्टिवेट हुआ और उसने क्या किया, एटीपी बना दिया। ठीक है, साथ में फोटो सिस्टम 1 से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, उन्होंने NADP प्लस को कन्वर्ट कर दिया NADPH में। नेक्स्ट इज light energy excites electron in the pigments which flow through the electron transport chain, pumping protons and generating ATP. The electrons ultimately reduce NADP plus to form NADPH. Products are ATP, NADPH, oxygen released as a byproduct. The products are used in Calvin cycle dark actions to fix CO2 into glucose. Next question is question number 7. Describe and sketch dark actions of photosynthesis. Dark actions of photosynthesis occur in the stroma of chloroplast and involve in the fixation of carbon dioxide into glucose using ATP and NADPH produced in the light reaction. Steps. Carbon fixation. Carbon is fixed into
a 3-carbon molecule called 3-phosphoglycerate 3-PGA via the enzyme Rubisco. Reduction of 3-PGA. 3-PGA is reduced to form glyceraldehyde 3-phosphate G3P using ATP and NADPH. Next is regeneration of RUBP. The enzyme RUBP ribulose bisphosphate is regenerated from G3P and CO2. Next is production of glucose. Two G3P molecules are combined to form one glucose molecule C6H12O6. नेक्स्ट इज स्केच। ये बच्चों है डार्क एक्शन या जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं इसका स्केच। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट था RUBP, उसके साथ आके एक मॉलिक्यूल CO2 का अटैच हुआ तो हमारे पास क्या बन गया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद उसने क्या किया कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया 3-PGA बाय यूजिंग फॉस्फेट फ्रॉम ATP। उसके बाद क्या होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate G3P में बाय रिडक्शन ऑफ NADPH टू NADP+। और ये जो हमारे पास G3P बना है उसमें से एक यूज हो जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए और बाकी दोबारा से क्या बना लेंगे RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये है बच्चों हमारे पास स्केच ऑफ डार्क एक्शन और केल्विन साइकिल। CO2 is fixed into 3-PGA which is then reduced to G3P using ATP and NADPH. RUBP is regenerated and two G3P molecules are combined to form glucose. Next is products. Glucose CH12O6, oxygen is released as a byproduct. Overview. Light reactions produce ATP and NADPH which are used in dark reaction to fix CO2 into glucose. The Calvin cycle is a critical step in photosynthesis, allowing plants to store energy from sunlight in the form of glucose. Note, the dark actions do not require light to occur, but they do require the product of light reaction ATP and NADPH. Next question is question number 8. Explain the factors affecting rate of photosynthesis. The rate of photosynthesis is affected by several factors which can be categorized into two main groups: environmental factors and plant factors. Environmental factors include light intensity. Increasing light intensity increases photosynthesis rate, but beyond a point it can lead to photoinhibition. Next is temperature. Optimal temperature range for photosynthesis is between 20 to 30 degrees Celsius. Higher or lower temperatures can reduce photosynthesis rate. Next is water availability. Drought conditions can limit photosynthesis while excessive water can lead to root and reduce photosynthesis. Next is CO2 concentration. Increased CO2 concentration can enhance photosynthesis rate but only up to a point. Oxygen levels. High oxygen levels can inhibit photosynthesis. Next are plant factors. Chlorophyll content. Higher chlorophyll content can increase photosynthesis rate. Leaf structure. Leaf thickness, shape and orientation can affect absorption and photosynthesis rate. Nutrition availability. Adequate nutrient supply, especially nitrogen, phosphorus and potassium, is essential for photosynthesis. Genetic factors. Plant species and variety can influence photosynthesis rate. Age and limit. Age and health. Young healthy leaves tend to have higher photosynthesis rates than older or stud leaves. Interactions between factors. First one is light and temperature interaction. Optimal temperature for photosynthesis varies with light intensity, water CO2 concentration. Drought conditions can limit CO2 uptake and reduce photosynthesis rate. Nutrient light interaction. Nutrient deficiencies can reduce photosynthesis rate, especially under high light conditions. Understanding these factors and their interactions is crucial for optimizing photosynthesis and plant growth in various environments. Next question is question number 9. Compare respiration and photosynthesis with example. सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की।
तो C6H12O6 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O plus ATP। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों वाल? ये है रिस्पायरेशन की। और नीचे वाली 6CO2 plus 6H2O plus लाइट gives us C6H12O6 plus 6O2। ये किसकी है? ये है बच्चों हमारे पास फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट है डायरेक्शन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है फर्स्ट वन में, यानी रिस्पायरेशन में। पहले हमारे पास रिस्पायरेशन का कॉलम है, ये जो बीच में मैंने ऐसे लगाया हुआ है ये सेपरेटर, उसके बाद आगे फोटोसिंथेसिस का पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या है? रिस्पायरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होती है, ठीक है। एनर्जी, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एब्जॉर्ब एनर्जी, ऑक्सीजन कंज्यूम्स ऑक्सीजन, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रोड्यूसेस वाटर, कंज्यूम्स वाटर। लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया सेल, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल। एग्जांपल ह्यूमन ब्रीथिंग, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, प्लांट ग्रोथ, एलजी प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा एग्जांपल्स हैं रिस्पायरेशन की डेली लाइफ से। Human body breaks down glucose to produce energy for movement and function. Cellular respiration in yeast ferments sugar to produce ethanol and carbon dioxide. Photosynthesis. Plants convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen using sunlight. Algae produces glucose and oxygen through photosynthesis, supporting aquatic life. In summary, respiration breaks down glucose to release energy, while photosynthesis synthesizes glucose using energy from light. Both processes are essential for life on Earth, with respiration supporting individual organisms and photosynthesis supporting the global food chain. Next question is question number 10. What are the advantages and significance of anaerobic respiration and fermentation in your daily life? Anaerobic respiration and fermentation have several advantages in and significances in our daily life. Advantages: energy production. Anaerobic respiration generates energy for muscles during high intensity, short duration activities. Food production. Fermentation produces yogurt, cheese, bread, beer, and wine, enriching our diet. Waste management. Anaerobic respiration helps break down organic waste in landfills and sewage systems. Biofuel production. Fermentation produces biofuels like ethanol and biogas. Significance. Muscle function. Anaerobic respiration enables short bursts of energy for muscles. Food preservation. Fermentation preserves food by creating an acidic environment, inhibiting bacterial growth. Ecological balance. Anaerobic respiration contributes to nutrient cycling in ecosystems. Next is industrial applications. Fermentation is used in pharmaceuticals, chemical sciences, and textile manufacturing. Daily life examples. First one is exercise. Anaerobic respiration fuels sprinting, weightlifting, and other high quality activities. Yogurt and cheese production. Fermentation creates these dairy products. Bread making. Yeast fermentation produces carbon dioxide, causing causing dough to rise. Biofuel production. Fermentation converts biomass into renewable energy sources. In summary, anaerobic respiration and fermentation play vital roles in energy production, food processing, waste management, and industrial applications, making them essential processes in our daily life. Okay, hopefully आपको समझ आ गए होंगे. If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you.